राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के आज के आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी हमारे बीच अब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम अनुरोध करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम गणमान्य अतिथियों से मंच पर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करेंगे। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जानमाल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करेंगे सदस्य और विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री राजेंद्र सिंह जी को। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह सचिव महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मेरे सहयोगी सदस्यगण, विभागों, मंत्रालयों, संस्थानों एवं राज्यों के अधिकारीगण, मेरे प्रिय आपदा मित्रों, देवियों एवं सज्जनों। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अपनी और एनडीएमए परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारा उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन के लिए अपने व्यस्त समय से कुछ पल निकाल करके पाने के लिए मैं माननीय गृह सचिव महोदय भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एवं उनका इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत करता हूं। एनडीएमए हर वर्ष किसी एक विशेष केंद्र को रखते हुए अपना स्थापना दिवस मनाता आ रहा है। इस वर्ष एनडीएमए का स्थापना दिवस का विषय है जागरूकता के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन के लिए जन समुदायों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सशक्त बनाना। इस विषय का मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी बढ़ाना और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करना, ताकि हम लोग सशक्त भारत और सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकें। बस 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डीआरआर के दौरान प्रतिपादित 10 सूत्रीय एजेंडा के कार्यान्वयन एवं समावेशी आपदा प्रबंधन के पथ पर
एनडीएमए सभी भागीदारों के समन्वय के साथ अग्रसर है। आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के सभी आयामों पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के साथ एनडीएमए समुदायों को साथ लेते हुए निरंतर प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार भारत सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप 2016 में अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बना था, उसी प्रकार 2030 में भारत सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बनकर एक पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एनडीएमए अपने विजन सभी भागीदारों को शामिल करते हुए बचाव, तैयारी और प्रशमन की संस्कृति का विकास करते हुए समेकित, सक्रिय और तकनीकी आधारित एवं सतत विकास की रणनीति द्वारा एक सुरक्षित एवं आपदा रोधी भारत के निर्माण के प्रति कृत संकल्प है। जहां एक और आपदापूर्ण चेतावनी और मोचन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकतम तकनीकों के द्वारा उच्चतम स्तर प्राप्त करने के पथ पर एनडीएमए निरंतर अग्रसर है, वहीं आपदाओं के प्रशमन के क्षेत्र में एनडीएमए की निगरानी में अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में जन भागीदारी को व्यापक रूप से शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कोष का प्रावधान किया गया है। एनडीएमए न केवल स्वयं इन कोषों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए समुचित उपयोग कर रहा है, बल्कि राज्यों को भी इन कोषों के सही उपयोग के लिए संवेदित एवं प्रेरित कर रहा है। प्राकृतिक एवं मानव जनित विभिन्न आपदाओं से निपटने एवं त्वरित कार्रवाई के लिए राज्यों एवं अन्य भागीदारों के साथ समय समय पर एनडीएमए द्वारा मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं, जिससे आपदाओं के समय किसी प्रकार के समन्वय की समस्या ना हो और मोचन में बिल्कुल विलम्ब ना हो। आपदाओं का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक प्रभावी एवं त्वरित रूप से किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखकर राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने तथा एसडीएमए और डीडीएमए को सुदृढ़ बनाने में एनडीएमए अनेक प्रयास कर रहा है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली एवं आवश्यक कदम होता है स्थानीय स्तर पर आपदाओं का मोचन। एनडीएमए ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए आपदा मित्र नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में 2021 में शुरू की थी, और आज 350 जिलों में जो टारगेट हम लेके चले थे, आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस टारगेट को 1 लाख आपदा मित्रों को हमने आज पूरा कर लिया है। आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने हाल की आपदाओं के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को कई तरह से सहायता प्रदान की है, जिसमें बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि से निपटने के लिए स्थानीय लोगों को निकालने में आवश्यक त्वरित सहायता और आपदाओं के दौरान आपातकालीन मोचन शामिल है। इस योजनाओं ने समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। इस योजनाओं में महिलाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महोदय, आज आपकी उपस्थिति में मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपदा मित्र योजना की अपेक्षित सफलता के बाद आज एक बार पुनः माननीय गृह सचिव द्वारा इसके एक नए विस्तार युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आपदा मित्र योजना के नए चरण का उद्देश्य एनसीसी, एनएसएस,
NYKS और भारत स्काउट एंड गाइड जैसे युवा संगठन को ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जनसांख्यिकी को शामिल करना है। इन जीवंत प्रेरित समूहों का उपयोग करके इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वयंसेवा आधार सेवा ऊर्जावान और आपात स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों। ये युवा स्वयंसेवक नई सोच, नए दृष्टिकोण, नए उत्साह से समाज में नई चेतना लाएंगे और आने वाले समय में यह अपने को एक स्वयंसेवकों द्वारा सामुदायिक आपदा मोचन बल के रूप में पूरे राज्यों में अपने को प्रस्तुत करेंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं माननीय महोदय आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने 2021 में हमें इसी मंच से एक वाक्य कहा था कि यह प्रेरणादायक वाक्य था, आह्वान किया था जब उन्होंने कहा था कि यह समय रुकने का नहीं है, हमें और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निरंतर नए नए प्रयास करने चाहिए। मुझे माननीय गृह सचिव महोदय को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम आपके कुशल नेतृत्व में इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु वैश्विक स्तर पर अपना प्रयास जारी रखा है और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक अलग कार्य समूह का गठन करना इसमें हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और NDMA भी जन समुदाय की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए प्रतिबद्धित है और निरंतर प्रयासरत है। हम इसके लिए माननीय महोदय आपके बहुत आभारी हैं और हमें आशा ही नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि आप हम सभी को आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी गणमान्य अतिथियों का आज NDMA के इस विश्व स्थापना दिवस पर समारोह में अंतःकरण से स्वागत और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के जोखिम से निपटने में समुदायों को सशक्त करने पर लगातार काम कर रहा है। समुदाय आपदा न्यूनीकरण में एक महत्वपूर्ण घटक और भागीदार है। आज की थीम के तहत NDMA की निदेशक सुश्री मृणालिनी श्रीवास्तव एक संक्षिप्त प्रस्तुति एवं ब्यौरा प्रदान करेंगी। स्वागत है आपका। माननीय गृह सचिव महोदय, NDMA के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष सदस्य, पूर्व सदस्य, महानिदेशक अग्निशमन एवं नागरिक सुरक्षा, सलाहकार प्रशमन, अतिरिक्त सचिव गृह एवं आज के कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण, सुप्रभात। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी की अनुमति से मैं 20वें स्थापना दिवस के विषय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण जागरूकता के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, इस पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्वरित और संगठित प्रतिक्रियाओं में समुदायों को आपदा प्रबंधन के चारों चरणों तैयारी, मोचन, पुनर्बहाली और प्रशमन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया है। आपदा प्रबंधन में हमारे मार्गदर्शन के सिद्धांत और स्रोतों में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 सूत्री कार्यक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय तंत्र सेंडाई ढांचे के अनुरूप हैं, हमारी आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना इसमें शामिल हैं। इनके तहत समुदाय एवं विशेष जनसमूह, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य वंचित एवं कमज़ोर समूह निहित हैं। हमारी नीति, योजनाएं एवं परियोजनाएं लोक केंद्रित हैं, समावेशी हैं। यहाँ स्त्रियों का समावेश है, दिव्यांगों का समावेश है एवं अग्रिम कार्रवाई में समुदायों को साथ लेकर बनाई गई हैं। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन में सहभागिता के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में समग्र सरकार एवं समग्र समाज को केंद्र में रखा है।
सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने राष्ट्रीय स्तर के साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए हैं। यहाँ प्रशिक्षण और तकनीकी के माध्यम से इन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। वहीं समाज के स्तर पर महोदय राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन इकाइयाँ स्थानीय समुदायों, सिविल सोसाइटी, समुदाय आधारित संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी क्षेत्रों को एकजुट करके उनसे विचार विमर्श करके उनमें जागरूकता ला रही हैं और उनका प्रशिक्षण कर रही हैं। आज हम आपको 4 चरणों में समुदायों के सशक्तिकरण की परियोजनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। महोदय, पहले चरण में तैयारी, या जिसे प्रचलित शब्दों में प्रिपेयर्डनेस कहा जाता है, इसमें हमने समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए हैं। हमने कृत्रिम अभ्यास अर्थात मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से समुदायों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया है। महोदय, हमने विगत 4 वर्षों में 83 मॉक एक्सरसाइजेस की हैं जो विशिष्ट मौसमी आपदाओं, धार्मिक सम्मेलनों, यात्राओं और महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं संबंधी मॉक एक्सरसाइजेस शामिल हैं। हमने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में पहली बार रात्रिकालीन मॉक एक्सरसाइज सफलतापूर्वक की है। इस तरह की रात्रिकालीन अभ्यास देश के अन्य क्षेत्रों में कराने की हमारी कोशिश है। महोदय, देश के सभी क्षेत्रों में आपदा से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए विगत वर्षों में हमने 3 क्षेत्रीय सम्मेलन किए हैं और साथ ही आपदा के क्षेत्र में सिविल मिलिट्री सामंजस्य को बढ़ाने के लिए हमने विभिन्न कमानों में आपदा जागरूकता सम्मेलन आयोजित किए हैं। पूर्व चेतावनी प्रसार में अंतिम छोर तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी लगातार कोशिश जारी है। इसमें हम सचेत, जो कि सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल पर आधारित है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही सेल आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी पूर्व चेतावनी प्रसार के लिए किया जा रहा है। इसके साथ संपर्क वृद्धि सहयोग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसको भी कार्यान्वित किया गया है। सर, हमारा हफ्ते में एक बार आने वाला आपदा का सामना काफ़ी सफल प्रयोग रहा है। डिजिटल सिनेमा के अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में लगभग 9,000 थिएटर में 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन में आपदा के बचाव संबंधी लघु चलचित्र दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे कि अंडमान और निकोबार में स्थित 2 सिनेमाघरों में भी यह लघु चलचित्र दिखाई जाती हैं। माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश के तहत आपदा से बचाव संबंधी जागरूकता सामग्री भी देश की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरा चरण मोचन। राष्ट्रीय और राज्यों के विशिष्ट आपदा मोचन बलों के अलावा मोचन के अंतर्गत हमने आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए आपदा मित्र योजना का क्रियान्वयन किया है। जैसा कि आपने सुना इससे पहले कि यह एक सफल प्रयोग रहा है। इसके प्रायोगिक तौर पर हमने 2016 में 25 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 30 जिलों में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। माननीय गृह मंत्री जी के ही कर कमलों से 2021 में इसकी उन्नत योजना चरण लागू की गई थी और आज हम माननीय मुख्य अतिथि के हाथों से आज इसका शुभारंभ देखेंगे, इसके युवा आपदा मित्र स्कीम का। महोदय, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा प्रशमन चरणों में हम समुदायों को एकजुट होकर आपदा पश्चात ज़रूरतों को आकलन करते हैं। हमने यह प्रणाली विगत दिनों में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एवं केरल में वायनाड में इस्तेमाल की है। प्रशमन एक ऐसा चरण है जिसमें संरचनात्मक प्रशमन में स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, इसमें हम समुदायों के विचारों को निहित करते हैं। आपको ये बताते हुए हमें हर्ष है कि राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना पूर्ण हो चुकी है एवं तटवर्ती इलाकों में जागरूकता का प्रभाव देखा गया है। तटवर्ती क्षेत्रों में राहत शिविर जानकारी, बीमा जानकारी, आर्थिक सहायता प्रणाली सुचारू पाए गए हैं। बिपरजॉय और हाल ही में दाना चक्रवात के दौरान इससे समुदाय के स्तर पर परिणाम सकारात्मक पाए गए हैं। अंततः समुदायों को साथ लेते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक धारणीय सतत प्रारूप की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
एनडीएमए आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कई मोर्चों पर कार्यरत है और इसी दिशा में आज एनडीएमए के 20वें स्थापना दिवस पर हम माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों द्वारा कुछ दिशा निर्देशों का शुभारंभ करने का अनुरोध करेंगे। और इस कड़ी में हम सबसे पहले आपदा प्रबंधन अभ्यास पर दिशा निर्देशों का विमोचन शामिल है। हम गणमान्य अतिथियों से निवेदन करेंगे, ये दिशा निर्देश राज्यों संघीय क्षेत्रों द्वारा आयोजित मॉक एक्सरसाइज के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। इसी कड़ी में आगे है गाइडलाइंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ HADR के लिए नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य है आपदा प्रभावित देशों को त्वरित, कुशल और समन्वित सहायता प्रदान करने के लिए भारत की क्षमताओं को बढ़ाना। ये दिशा निर्देश जो समावेशिता, पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो निस्संदेह वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना एवं संचालन के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देशों का संपादन किया गया है। ये दिशा निर्देश राज्य, जिला और तहसील मंडल के स्तर पर अधिकारियों एवं आपदा प्रबंधकों और विभिन्न हितधारकों को एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रणाली के तहत अपने कार्यकलापों को वहन करने में मदद करेगा। और इसी कड़ी में आगे SOP ऑन ऑफ साइट इमरजेंसी एक्शन प्लान है। रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए ऑफ साइट आपातकालीन कार्य योजना का दस्तावेज के विमोचन का अनुरोध करेंगे। ये दस्तावेज जिलों में रासायनिक आपातकालीन मोचन के मानकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है, जो कि लाइन विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य संबंधित इकाइयों और आपातकालीन मोचकों सहित संबंधित हितधारकों को संकट के दौरान स्पष्ट निर्देशों के साथ त्वरित और समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। इसी में आगे गाइडलाइंस ऑन CBDRR शामिल है। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदाय एक प्रमुख हितधारक है। NDMA ने समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिशा निर्देश विकसित किए हैं। दिशा निर्देशों में स्थानीय मुद्दों और स्थानीय समाधानों को प्राथमिकता दी गई है। और इसी कड़ी में अब आगे है आपदा प्रबंधन हिंदी शब्दावली। विभागीय तकनीकी शब्दावली के विमोचन का अनुरोध करेंगे हम सभी गणमान्य अतिथियों से। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि में सभी सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी दिशा में NDMA भी अन्य सभी विभागों के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। NDMA में आपदा प्रबंधन के तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण का ये पहला प्रयास किया गया है। और माननीय मुख्य अतिथि, हम आपको बताना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में NDMA ने 2016 से 1,02,715 से अधिक स्वयंसेवकों को आपदा मोचन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। और 20वें स्थापना दिवस पर NDMA गर्व के साथ युवाओं के लिए एक नई योजना युवा आपदा मित्र की शुरुआत कर रहा है। और उसी योजना पर आधारित इस पुस्तिका के साथ ही हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज युवा आपदा मित्र योजना की भी शुरुआत की जाए। ये युवाओं को प्रोत्साहित करने की एक बड़ी योजना है। ये नई युवा आपदा मित्र योजना, जिसमें आपदा के दौरान युवाओं को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। देश के करीब 315 सबसे अधिक आपदा संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र वॉलेंटियर्स और विशेष रूप से हमारे बीच भी जो मौजूद हैं NCC, NSS, NYKS और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से लिए गए 2,37,00,000 वॉलेंटियर्स को इसमें शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सूचित करेंगे NDMA ने मई महीने में भारत सरकार के MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से हीट वेव पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रतियोगिता में देश भर से 20,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें देश के स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर
माननीय मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता की एक विजेता भुवनेश्वर से डीएवी स्कूल यूनिट 8 की 10वीं क्लास की छात्रा सुश्री प्राप्ति प्रतीक्षा साहू को सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं तमाम उन पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जोरदार तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइए उन तमाम युवाओं का जो आपदा प्रबंधन की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। और अब हम एनडीएमए के 20वें स्थापना दिवस के आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी से आपके उद्घाटन संबोधन का विनम्र अनुरोध करेंगे। Respected members of the National Disaster Management Authority, Shri Rajendra Singh Ji, General Atasnan Ji, Shri Krishna Vatsa Ji, my colleague in the Ministry of Home Affairs, Shri Sanjeev Jindal, Additional Secretary, Shri Shafi Rizvi, Advisor NDMA, ladies and gentlemen, members in the audience. First of all, on this occasion of the 12th Foundation Day of the NDMA, I would like to extend, on behalf of my ministry and on behalf of the Government of India, our heartiest congratulations and best wishes to the entire country, including the members, former members, officers, and employees of the NDMA. Today, after a relatively short journey of maybe around 2 decades or so, this organization has succeeded in instilling in our countrymen a confidence that there is in place a coordinated system of disaster management which is working in an organized manner to deal with any kinds of disaster in an effective and timely manner, and which to my mind is a substantial achievement. I'm also very happy to inform here today that our mantra for disaster response, mitigation, preparedness, and all the aspects of disaster handling is not only working for disaster reduction in India, but keeping in mind our global responsibilities, and in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we are also helping other disaster-struck nations across the world. We have, in fact, in a very little time, become leaders in the art and science of disaster management. The topic that NDMA has chosen today for its 20th Foundation Day is empowering communities for disaster risk reduction through awareness for behavior change. This is a timely topic. I do not tire in saying at every occasion that in the days and years to come, the incidents of disaster, the threats of disasters are going to increase manifold because of multiple factors which are playing together. It could be global warming, it could be the rising pollution levels, it could be the increasing population densities in many parts of this country at least, and also in many other parts of the world. But the cumulative effect of all of this is that disasters are becoming commonplace, and the scale and intensity of disasters is assuming proportions which we have not witnessed in the past. It is therefore essential that communities are empowered to deal with these disasters, which is going to become, as I said, a very frequent part of our lives in the days and years ahead. But to deal with disasters and reduce the risk of disasters, a behavioral and attitudinal change has to happen in the mindsets of the communities. And it is only through this behavior change that we can develop a culture of preparedness for disasters. And we have been, through the NDMA, through the cumulative efforts of the Ministry of Home Affairs
engaged in this direction in the last decade. As I said, communities are most affected by disasters, but communities can also reduce the impact of disasters, which not only reduce dependence on external help, but also reduces loss of life and property due to immediate availability of local help. In such a situation, community based disaster management is not only the need of the hour, but is also a powerful medium to connect every person with the requirements of disaster management. And I'm happy to inform that disaster management is not limited to experts and scientists, but is now increasingly getting integrated with people and communities. The work of disaster management and disaster risk reduction cannot be said to be complete until its benefits are extended to the most deprived and the last person standing at the bottom and furthest in the ladder of development. Our Honorable Prime Minister, keeping in mind the increasing importance of disaster response and management, presented a 10-point agenda, which was mentioned by member Shri Rajen Kumarji, on disaster risk reduction, adopting a holistic approach to disaster risk reduction and keeping in mind the priorities of the Sendai framework, which India has included in its disaster mitigation efforts. This agenda provides guidance also to other countries for disaster management, and these principles include promoting cooperation among all sections of society for disaster reduction, investing in disaster preparedness, and sharing of best practices. We give priority to effective use of technology and social media, developing networks in the academic sector, strengthening local capacities, and promoting international cooperation and disaster management. I would now like to speak briefly about the role of communities in all the four facets of disaster management, which the Director NDMA, in a short but very focused presentation, outlined in front of you. The role of communities, of course, is important in all stages, but in terms of pre-disaster preparedness and pre-disaster preparation, the communities have especially a very important role to play. Many technology-based programs like mock drills, emergency response support systems, common alerting protocols are being run through NDMA in various states of the country, including in remote areas. And all of these require full participation of communities. Along with this, we are determined to deliver pre-disaster information and warning to every household through a very innovative system of cell broadcast technology. We have recently had a meeting with the Department of Telecommunication and also the various internet service providers and telecom service providers to develop a technology-based system to create this pre-disaster information awareness and response system through state-of-the-art 5G technology. It is the result of effective pre-disaster warning and preparation that today we have been able to achieve our target of almost 0 deaths in cases of cyclones. We have seen a direct example of this during recent cyclones Biparjoy and Remal. Under pre-disaster preparation and early warning, well-planned steps have been taken for training and awareness of the public. And here I would like to especially talk about the importance of mock drills, which were briefly touched upon by the Director NDMA. There is no alternative to practice, and it is practice which provides confidence. We have increased community coordination and confidence among the public, including various stakeholders, through these mock drills. We have received extremely positive response on the feedback gathered during these mock drills. And recently, in a first-of-its-kind experiment, maybe in the whole of Asia, if not in most parts of the world, night mock drills have been started in the Leh-Ladakh regions, photographs of which you can see in the exhibition that is being set up by NDMA in the adjoining hall.
The whole purpose is to understand that disasters do not come by the clock, they do not come with a forewarning, they do not come with any forealerts. Disasters occur at nights, at extremely unusual hours, and these are particularly devastating. The recent horrendous, unfortunate incident in Wayanad is an example of this. And I would like to compliment NDMA, first of all, for doing these kinds of innovative experiments like night mock drills, but also to exhort and encourage them to plan such mock drills also in other hilly and also in coastal areas. So preparedness remains a very key area where communities have to be integrated with the efforts of the government machinery. A word here would be appropriate to talk about the funds that have been delegated for disaster management during the last 10 years, during the currency of the present government, which shows that this area is an area of extremely high importance for this government. To appreciate the relevance of the efforts made by our government in this area, it is essential to review the efforts made in the past. The 12th Finance Commission made a provision of 12,500 crore rupees under the State Disaster Management Fund for the block year 2005 to 2010. In the same format, the 13th Finance Commission made a provision of about 33,000 crore rupees for the block year 2010 to 2015. The 14th Finance Commission, constituted for the block year 2015 to 2020, proposed a provision of 61,000 crore, increasing this amount by almost 2 times, which was approved by the government subsequently. And taking this forward, understanding the importance of disaster management and keeping the needs of funds required for it as paramount, the 15th Finance Commission, which was constituted for the block years 2020 to 2025, has approved a proposal for an increase of almost 5 times compared to the 13th Finance Commission and sanctioned a total of rupees 1,60,000 crore for the various states and union territories of the country. The 15th Finance Commission at the same time also proposed a dedicated amount at the national level for the first time, which the government named as the National Disaster Risk Management Fund, and which was separately approved for rupees 68,500 crore for this purpose. Thus, for the year 2020-21 and the year 2021 to 2026, the government has allocated a total amount of rupees 2,28,000 crore for disaster management. I would again like to underline the base figure of 12,500 crore, which used to be the norm in 2005 to 2010, and within a period of 15 to 20 years, this amount has gone up by almost 16 to 20 times. And this only highlights the importance that this government, the Prime Minister, the Ministry of Home Affairs, they attach to this whole area of disaster management. Coming now to disaster mitigation. This again is an area like preparedness, where efforts made during this phase result in a reduction in the risk of disasters as well as a reduction in the loss of life and property. 20% of this National Disaster Risk Management Fund that I just spoke of, and 20% of the corresponding fund at the state level, which is the State Disaster Risk Mitigation Fund, are earmarked for disaster mitigation. Through these funds, various disaster mitigation programs are run by the central and the state governments. Currently, our government has proposed projects for implementation under mitigation, including the National Program on Glacial Lake Flood Risk, GLOF Risk Mitigation, which is, I would say, a path-breaking initiative of the NDMA, and which has already started full pelt in some of the states like Sikkim and Arunachal Pradesh.
Along with this, under this fund, we have also taken up the urban flood risk mitigation program for 7 major cities: Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Chennai, Greater Hyderabad, Bengaluru, and Pune. I also appeal to the state governments and district disaster management authorities to ensure public participation by adopting a consultative process, not only in preparation of these mitigation programs, but also in their implementation. Next, I turn to some efforts which require public participation as well as awareness generation in areas which are becoming increasingly a focus in terms of disaster risk and disaster risk preparation. Many people, as we all know, die every year due to heat waves and lightning strikes. I would also like to draw attention to the efforts being made in this area and would like to state that the National Disaster Management Authority issued guidelines to deal with heat waves in the year 2016 for the first time in this country, in which special emphasis has been given on public participation as well as awareness campaigns. Similarly, in the year 2019, the National Disaster Management Authority has also issued guidelines, again for the first time, on the problem of lightning. Many awareness programs were conducted under these two guidelines, and as a result, the loss of life due to both these disasters has reduced significantly. Along with this, various mobile apps have also been developed through which people get proper warnings in time. And the consequence of all of these efforts is that we have reduced the loss caused by these disasters to a great extent. There is still a need to continue these efforts so that the incidence of deaths due to heat waves and lightnings can progressively be brought down to zero across the country. The NDRF, the National Disaster Response Force, and the SDRFs, the State Disaster Response Force, have made a mark in their respective areas of work and have established credibility among the people. And when I talk about this, I come to another aspect in this 4-point framework, which is that of response. The NDRF and the state and the SDRF have risen to every challenge and have fulfilled their responsibilities during the response time post-disasters. Apart from these disaster response forces, the 3 wings of our armed forces, the Army, the Navy, and the Air Force, have always provided their services as per the requirement during disasters and have protected the lives and property of the disaster affected with their expertise and modern equipment. It is difficult to find another example of the way in which all the stakeholders together rescued the 41 personnel trapped in the Silkyara tunnel in Uttarakhand through a coordinated response, which was done under the leadership and the visionary work of the NDRF. And this is now touted as a global best practice in disaster response in similar situations across the world. It is noteworthy that even in terms of response, the public and the communities have not lagged behind. The Abda Mitra is an ambitious scheme of the NDMA, which was mentioned both by the member as well as by the advisor, through which we are trying to strengthen community-based disaster management. During any disaster, the people closest to you are your own, your family, your friends, your relatives, your community, and your society. Some of these selected people are being trained as Abda Mitras or disaster friends, if we can call it that. And they are being prepared to deal with disasters at the initial stage, reduce their impact, and contribute to protecting the people of the community from the horrendous impacts of some of these disasters. It is a matter of pride that women also have an important participation in this program. And after the success of the pilot phase of the Abda Mitra scheme, 3 years ago on this very day, we had started the expansion of this scheme, in which we had set the target of preparing 1 lakh Abda Mitras. I am very happy today that we have trained
this army of 1 lakh Abda Mitras, and we have made them competent to deal with disasters of every kind in every nook and corner of the country. Under the Abda Mitra Yojana, about 3,000 Abda Mitras have taken steps in cooperation and response in 88 disaster response situations in the past years, and due to their collaborative efforts, we have been able to save about 80,000 people in the country in disasters, out of which 129 lives have also been saved after disaster struck and during the immediate aftermath of those disasters. It is a matter of personal good fortune for me because the Abda Mitra scheme got its initial wings when I was in the Home Ministry looking after the Disaster Management Division as an additional secretary, that today I have had a chance also to start and to launch the Yuva Abda Mitra Yojana, which is a new and unique form of the expansion of the earlier Abda Mitra Yojana. The Yuva Abda Mitra Yojana is a unique initiative to provide community service in the field of disaster management to about 2.5 lakh volunteers who are already available and are associated with society already through organizations like the NCC, the NSS, the Nehru Yuva Kendras, and Bharat Scouts and Guides. The target has been set to train at least 50% women in the Yuva Abda Mitra Yojana. I congratulate the NDMA and all the associated stakeholders for this scheme and for bringing it to fruition in this manner and on this occasion. In the coming times, these young Abda Mitras, the Yuva Abda Mitras, will be ready to become first-line protectors of the society at the time of disasters. I not only hope, but am confident that this will be a successful scheme, and in the coming time, every house will have a disaster friend and in many cases, a Yuva disaster friend. So, I'm coming towards the conclusion of my address, and hopefully I have covered the way in which communities can be integrated in all phases of disasters, whether it is in the whether in the preparation phase, or in the immediate response phase, or in the preparedness phase, or in the mitigation phase. Next, let me turn to some of the other initiatives that we have taken. We have established the prestigious Subhash Chandra Bose Disaster Management Award to recognize and honor individuals and institutions doing excellent work in the field of disaster management. This award recognizes contributions in prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovation, and early warning systems. And every year, the ceremony to mark this particular award-giving occasion is done in a manner which is befitting to the importance of this award. India has also created a unique identity in the field of disaster management at the global level, which I had referred to very early in my talk when I mentioned that in keeping with the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we are also now advisors to many countries across the world in this very important area. And India is emerging as a global leader. The NDMA, on its part, is moving forward in a coordinated manner with all the stakeholders towards the implementation of the 10-point agenda presented by the Honorable Prime Minister during the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in 2016, and an inclusive disaster management ideology was an intrinsic part of the presentation of our Honorable Prime Minister. During this 10-point, as part of this 10-point agenda, the Honorable Prime Minister had proposed an alliance called the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure in the year 2019 from the platform of the United Nations to share information and technologies of robust infrastructure required for disaster management at the global level. Currently, around 48 countries of the world have joined this alliance, and through the efforts made under it, efforts have been made to achieve the goals of sustainable development. Apart from this,
Efforts of public participation, such as participation of women and their leadership, networks of universities, local capacity enhancement, and so on, were also included in this 10-point agenda, which informs disaster management efforts of not only India, but many other countries in the Asian region. Last year at this time, the G20 summit was organized in India, in which many important initiatives were taken in the field of disaster management during India's presidency of the G20. For the first time in the G20 summit, an executive group on disaster risk reduction and public participation were given due place. I am happy that in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, NDMA has not only strengthened itself, but also strengthened other partners. NDMA is playing a strong role in preparing the states and union territories, as well as central ministries and departments in the area of disaster management. Recently, we were in Ahmedabad for the Foundation Day of the Home Guards and Civil Defense, and a point was made by the Honorable Home Minister about Home Guards and their importance in the area of disaster management. And I just would like to repeat what he said. In his own words, he said that this whole goal of Viksit Bharat is not possible unless we underline it on two critical dimensions. One is that of seva, which is service, and the other is that of suraksha or security. The role of Home Guards, he elaborated further, was to help, was to assist, was to complement and supplement the efforts of the normal disaster management framework and the entities who are responsible for it on the dimension of seva, and similarly on the dimension of suraksha, the civil defense volunteers also had a critical role. Coming back to the vision of the Honorable Prime Minister and taking a lead from what the Honorable Home Minister had said, it is very critical now that in 2047 we become Viksit Bharat, we become a developed country. And therefore, it is also equally important to work towards a disaster resilient India. While the importance of this aspect is sometimes forgotten, sometimes not borne in mind to the extent that it deserves, but we should be very, very sure that there cannot be a developed India, a developed Bharat, till we have a disaster resilient Bharat, disaster resilient India. Every disaster brings suddenly, without any warning, without any alerts, a tragedy which is sometimes almost incomprehensible in its magnitude, which is so upsetting to local economic networks that it can take years before the economy can be regenerated. And so if we have to grow the economy on the trot, enable an 8% to 10% growth year by year, it is important that we are prepared and we are able to bounce back on our feet within the shortest possible time. The NDMA is taking various initiatives, running many programs and projects towards achieving this goal of a disaster resilient Bharat. And once again, on this occasion of their 20th Foundation Day, I congratulate NDMA and extend on behalf of my minister, on behalf of the ministry, and on behalf of the Government of India, our best wishes and hope that after today's program, disaster management will get a new dimension through awareness and capacity building at the local level, and community leadership in disaster management will also get further strength. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद माननीय। आपके मार्गदर्शन में एनडीएमए डीआरआर की दिशा में जनभागीदारी और जागरूकता को और मजबूत करेगा। अब हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सलाहकार एनडीएमए श्री सफ़ी एहसन रिजवी जी को आमंत्रित करेंगे। Honorable Union Home Secretary, members of NDMA, HOD,
Mr. Vivek Srivastav, and scientists and participants at this formation day of the NDMA. It was an extremely good inaugural session with an outstanding presentation from Renalini, preceded by a very fine set of words that came from our HOD, and then an extremely good overview of disaster management in India today from the Home Secretary. That overview is, in a nutshell, all that has been done in the last several years since NDMA has been formed, the manner in which the Home Secretary sketched the increase in financial provisioning by the finance commissions in the last 4 finance commissions is something, a case in point, which shows you how far we have reached and how much we have to go. Home Secretary's warning that the disasters, especially heat and precipitation, are changing in their FDI, their frequency, their duration, and their intensity. That is a warning that all of us are aware of. And his final word that we should take this formation day as a paradigm shift. And the paradigm shift, we must inform the Union Home Secretary, is already underway. We are moving into various other areas now that you have 7-day warnings for cyclones. We are wondering why we can't have early warnings for various other disasters. If prevention and mitigation has been provided for by the mitigation fund, the new initiative on urban floods and that on glacial lakes, especially from the mitigation fund, is a completely new start, and we are going to take these things way forward. So thank you so much. And lastly, and most importantly, the thanks to the fulcrum of all our efforts, Mr. Jindal, who is the Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs. He's been there for a long time, and his support for all our initiatives and the general push that we get from him, from that NDMA is very grateful to you, Mr. Jindal. So in the next several months and years that the Home Secretary is with us, we wish that we will continue to keep getting his support, his guidance, and his push, as we have noticed that he's really pushing us hard, and he's doing it very politely and very sweetly. The way he speaks is the kindest way that is possible. So thank you so much for your personality, for your intelligence, for your understanding of the problem, and for just being there. Thank you. और उद्घाटन सत्र की उपस्थिति के लिए मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मंच पर आसीन अतिथिगण से अनुरोध करते हैं कि आपदा मित्रों के साथ फोटोग्राफ के लिए कृपया प्रस्थान करें। और हॉल में मौजूद अन्य गणमान्य अतिथियों से कृपया हाई टी के लिए आप सभी प्रस्थान करें और ये भी अनुरोध करेंगे कि ठीक उसके बाद एकत्रित हो इसी हॉल में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। कृपया आप सभी हाई टी के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।